Hello, Bilal. Come back, Bilal. Come back. Come back. Come back. I think this is my favorite episode ever. I love it. किधर हो, Bilal? Bilal. Bilal. Where is Bilal? Bilal Iqbal. Acha, if you have any questions, please ask them. It would be really good if we can get questions. Kidhar hai Bilal? Where is Bilal? Bilal. Okay, जब तक बिलाल आते हैं I'll just recap. बिलाल आज हमारे साथ हैं, अभी भी हैं. बिलाल पता नहीं किधर हैं. बिलाल ने बहुत अमेजिंग बातें की हैं and you have learned about his life and how difficult it has been for him, and फिर भी he found the strength and the motivation to go on, to carry on, to live on and to live it to his best of abilities. Or Bilal, please join. Send request. तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छी लग रही होगी ये एपिसोड. आई लव इट. यस. Again, if anybody has any questions, please ask. Meanwhile, मैं बिलाल से एक दो questions पूछूंगा. Now you are a doctor, mashallah, mashallah, mashallah. ठीक है? Now you are on your way to becoming a good doctor. Or please ask questions if you have just joined. Please keep asking questions about anything, parenting, or we have a screwed up child to answer your question. तो अगर आप भी screwed up हैं तो please ask him. अच्छा, मैं पूछ रहा था कि now you're a doctor and now you know, मतलब was becoming a doctor a part of this? Yeah, you just wanted to be a doctor and you just became a doctor. नहीं, initially I wanted to join the army. अच्छा. And then the आर्मी में डॉक्टर या सिर्फ नहीं, सिंपल आर्मी हमेशा से. उसके बाद फिर I wanted to उसके बाद मेरे इंटरेस्ट हो गए चेंज एंड मुझे मेडिसिन बायोलॉजी अच्छी लगने लग गई. फिर उसके बाद थोड़ा मेरा हो गया कि आर्मी डॉक्टर बनना है मैंने. अच्छा. फिर उसके बाद हाँ, फिर डॉक्टर बन गया हूँ. अब आर्मी का सोचते हैं कुछ. तो इसमें वो जो सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सारी चीजें, डू यू फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल बीइंग अ डॉक्टर टू के यार मैंने ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, आई हैव टू डू समथिंग गुड इन द वर्ल्ड विद माय दिस स्किल? ऑफ कोर्स यार, सबसे पहले तो पाकिस्तान आता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है. मैंने क्या नाम है, शौकत खानम जितना जैसा कुछ करना है मैंने. ठीक है, अभी मेरा आई एम नॉट श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं इतने लार्ज स्केल पे कैसे करूंगा, लेकिन मैंने करना है. कैसे अल्लाह ताला रास्ते बनाएगा. और डू यू थिंक कि देयर इज अ नीड फॉर फैमिली काउंसलिंग, psychologists and places where family issues are, मतलब लोग स्पेशलाइज्ड हो, साइकोलॉजिस्ट हो इन फैमिली थेरेपी एंड फैमिली काउंसलिंग, और इस चीज की पाकिस्तान में जरूरत है? पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है. हम लोग एज ए नेशन काइंड ऑफ वी आर अ सप्रेस्ड नेशन, और उस सप्रेस और प्रेशर की वजह से ही हम लोगों के अंदर से बहुत अच्छे लोग निकल रहे हैं. लेकिन अगेन वो रेजिडुअल जो इश्यूज हो जाते हैं वो रह जाते हैं, और ये बहुत जरूरी है. I'd rather recommend a psychologist than a psychiatrist.
हाँ, बिकॉज ये इस पे भी थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी बात करो। साइकोलॉजिस्ट यार हम लोग के जो सेटअप है साइकेट्रिस्ट, सॉरी, इधर इतना इन उस दोनों तरह में नहीं। फर्क है, इन दोनों में फर्क है। in simple terms, a psychiatrist can prescribe drugs. ठीक है, he can counsel you as well. और जो psychologist है, he can prescribe drugs. He cannot prescribe drugs. He can only counsel you. And I think that is way better than the one who can prescribe you drugs. और what made you stay away from number one drugs and number two, because it was so easy. तुम ये भी नहीं था कि एक्सेस नहीं था, एक्सेस भी पूरा था और मतलब सिचुएशन भी पूरी थी, एक्सेस भी पूरा था, फिर what was the thing which like took वही blah blah. यार I've never found attraction in drugs. Have you tried? No, not really. लेकिन I've seen people who try. कैसे बनेगी जब तुमने ट्राई नहीं किया? जो कर रहे होते हैं वो क्या एंजॉय करते हैं यार, ये तो फिर एक डिपेंडेंस हो गई ना बेसिकली, कि यार आप एक ड्रग नहीं करते तो आप लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकते। ये तो एक बड़ी फजूल सी बात है कि आप एक ऐसा ही है ना, एक यू नीड सम, यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अ थिंग to enjoy life. That sounds stupid. ठीक है, आप create things. I have to say that am I right in saying that you did almost make food your addiction? And Food is my addiction. Food is still my addiction. Food became a problem for you. Huh? Food did become a problem for you because at one point you were a तीली. A levels में एक टाइम आया था जब तुम तीली बन गए थे। हाँ, वो मैं तीली तब बन गया था क्योंकि आई वांट टू जॉइन द आर्मी, तो आर्मी का पैशन था। आई जस्ट डिड कार्डियो फॉर कंटिन्यूसली और फॉर 10 days आई हैड नथिंग टू ईट। ठीक है, आई जस्ट ड्रैंक वाटर और ये मैं इसी की वजह से gain weight back very quickly. वो body type भी होती है, that's a different story. So you did make food your addiction. You did become an addiction. Actually, there is a thing called stress eating. People when they get depressed or when they are stressed, they sleep or they eat or they smoke or they do drugs, whatever. So I used to sleep and eat. Even in my prof exams जो होते हैं बड़े stressful होते हैं, तो उसमें यही होता है, या मैं सोता था या खाता था, और मैं बहुत ज्यादा खाता था, मुझे फिर उतारा नहीं जाता था। ये तो उसने तुम्हें ये चैलेंजिंग टाइम्स दिए तुम्हें, या फिर you did not care about your like body issues और इस तरह? यार मेरा ये कि I've been into gymming since to A levels or O levels, तो मैं I know how good I feel when I am consistent in working out, because naturally आपके endorphins जो happy hormones होते हैं वो opiate centers receptors होते हैं brain में, जो वही receptors stimulate होते हैं जब आप drugs करते हो। तो अगर आपको natural high मिल रहा है और आपकी body अच्छी, when you look in the mirror you find yourself looking good, you looking better, you feel very good about it. तो why wouldn't a person फिर से बात करो कि what is equal to the thing that is released while doing drugs? मतलब ये एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा लिंक करो। इसमें ये है कि हैप्पी हार्मोन्स, इन सिंपल टर्म्स एंडोर्फिन्स होते हैं जिनको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, दे गेट रिलीज्ड, ठीक है, और वो स्टिमुलेट करते हैं आपके ओपिएट सेंटर्स को, इट्स इन योर ब्रेन, और ओपिएट सेंटर से फिर आपका डोपामिन, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, वो रिलीज होता है एंड यू फील गेट द हाई। अब जैसे आजकल की जो एडिक्शन है, हम लोग लाइक्स और व्यूज देखते हैं और हमारे वही डोपामिन रिलीज होती है एंड वी गेट काइंड ऑफ हाई। अच्छा, और बॉडी का ऐसा है कि बॉडी रिएक्ट्स टू योर ब्रेन, ठीक है। एक बंदा है, वो उसको प्लेसिबो ड्रग दो, एज एन ड्रग जिसके अंदर केमिकली ड्रग ना हो, बस एक फॉर्म हो और आपको लगे आपने खा लिया, और आपका ब्रेन आपको मैनिपुलेट करते हैं कि हाँ इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू, इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू, यू आर गोइंग टू गेट हेल्दी। तो ये करते हैं इंसान टू इंसान, या फिर ये हर किसी के साथ गारंटीड है कि दैट पर्सन विल एक्सर्ट एन एक्सरसाइज, फिर वो रिलीज होगा एंड दैट पर्सन विल डेफिनेटली फील गुड? इट इज डेफिनेट। अच्छा, हाँ,
It is definite. There comes a time when it becomes an addiction. अच्छा अब हाँ, यानी आपने जैसे सिगरेट ना पिया हो किसी स्मोकर ने, तो उसको पता है कि उसको अर्ज होती है. आप जिम जाओ, आपको रेगुलर हो, आपको अर्ज होती है कि अब देयर समथिंग मिसिंग. अच्छा सिमरन जो है वो ट्रोल करने की कोशिश करे. ओके इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डॉक्टर प्लीज. शिमरन है हमारे फ्यूचर ऑर्थोपेडिक सर्जन. प्लीज हड्डियां टूटे तो उनके पास आए, दिल टूटे तो मेरे पास आए. if you have any questions please ask. I think ये already मेरी most informed video अभी तक बनी है, and I think you thank Bilal Iqbal for really opening up. अभी बहुत से topics हैं, बहुत सी चीजें हैं जो I know कि अगर हम वो भी discuss करें तो we will help many other people, but maybe some other day. But अभी तक I think if I'm not wrong, बिलाल ने जो सबसे important बातें की हैं, that's acceptance of your condition, acceptance of your resources, and secondly to understand parents from their point of view. Or Rana Alam, if you have any questions, please ask. Assalamu alaikum. And understand parents from their perspective. और बिलाल ने एक और बात भी की कि पूरी जिंदगी वो इस तरह नहीं सोच सका, अब आके उसको ये चीज समझ आ रही है. Is that true? बिलाल सुन भी नहीं रहा. बिलाल कमेंट्स नहीं पूरी जिंदगी. सॉरी, कम अगेन प्लीज. बिलाल जो है वो पूरी जिंदगी ये बातें नहीं समझ सका, अभी आके he has started understanding these things. There is a reason behind that as well, जो मैं अभी आके समझ सका हूँ. Because once I am independent now, माशाल्लाह, ठीक है. I don't ask for pocket money or anything from my father, and अभी I am so independent कि अब मुझे होता है यार, कोई पूछ नहीं रहा तुम किधर हो, तुम कब घर आ रहे हो, तुमने खाना खाया नहीं खाया. अब उसमें फिर मुझे सोचने को होता है कि इन चीजों के बारे में. I have time to think upon, reevaluate life and decisions and my experiences. इसी तरह you grow, you learn from your mistakes, your past experiences, and then you don't try not to repeat them. Okay. हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इसलिए कि हमारे बोर हो रहे हैं यार. रिजवान कोई गाना सुना दे यार. नहीं, I think this was the best live session I've ever done. I do not have any bad feelings. That's good. ये बताओ, हमें बोल भाई, हमें what do you do when you're totally negative, and what do you do when the person who is asking is in a mess and he is in negativity, he has fallen into the negativity? How? Answer this question please. This person, Bolt 4040, is नाम को हटा के आप आंसर करें. हाँ बिल्कुल. He is one of my best friends. He is a very close and dear friend of mine. Or he knows what I'm talking about. And his question is very important. That what do you do when you're totally negative? So when I am totally negative, I meet him actually, and I talk to him. When I'm totally negative, I try not to stay secluded or alone. I try to talk it out to someone. I have my friends. If I can talk to my parents, I talk to my friends. That is for sure. I have a few friends like you, two, three other friends. खुद कभी नहीं आए, because I was never. That is a different. नहीं, हाँ, I go and talk to my friends. That is it. मेरा दिल हल्का हो जाता है. Do you expect anything in return from your friends, या फिर just तुम बस उन पे जाके निकाल देते हो और बस that's it?
यार नहीं आए एक्चुअली ये वही एक साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट वाली बात होगी कि आई जस्ट वांट टू टॉक टू समवन. ठीक है, आई नो इसका जवाब क्या है, आई आई हैव टू फाइंड द आंसर माई सेल्फ, बट आई जस्ट वांट टू समवन टू बी देयर टू लिसन टू मी एंड देन जस्ट हल्का फुल्का इनपुट दे ना दे मुझे नहीं फर्क पड़ता, दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तब भी मुझे कोई मसला नहीं. लेकिन So ऑब्वियसली you always know the answer yourself, फिर भी you go and talk to the person. Rana Alam Khan says, I just feel like my mind is foggy and I cannot solve problems. Rana, when you feel like that, again, my solution, I would give you the same advice. Go talk to someone. Communication is the best way to resolve, at least start resolving your issues. Break barriers. Have someone, either it's your mother, your father, or someone else, or your siblings. Talk to them. ठीक है, आप उनसे बात करो, and it always helps. अकेले बैठे रहने से empty mind is a devil's workshop. Your feelings are going to pile up and negativity is going to add on as well. And to add on to that, जैसे बिलाल ने पहले बात की कि do not expect anything in return. अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, but ये भड़ास निकालने का purpose is only to help yourself, right? बढ़ास तो नहीं निकाल रहे आप, अब बढ़ास इसको निकालना नहीं मैं बोलूंगा. वेंट आउट आप कर रहे हो अपनी हाँ डिप्रेशन या जो भी आपके इश्यूज हैं, यू आर टॉकिंग टू समवन, यू आर डिस्कसिंग इट विद समवन. यार आप किसी और के लिए अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू अ फेज एंड यू हैव आप निकल आए उस फेज से, ट्राई हेल्पिंग समवन एल्स आउट ऑफ दैट फेज, someone else who is going through that phase, someone you know you can help and can achieve something. आप किसी और की हेल्प करोगे ना, इससे ज्यादा खुशी मेरा नहीं ख्याल आपको मिलेगी. ये वही बाप और बेटे वाली बात हो जाती है कि बाप अगर देखता है मेरा बेटा एक्सेल कर रहा है, आप किसी दोस्त किसी XYZ किसी बंदे को अगर आप आगे लेके जाओगे ना, उसको उस हर्डल से निकाल दोगे, आपके अंदर एक पीस आता है. ठीक है, यू आर आप अपने आप से खुश रहते हो, और अपने आप से खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है. बाकी कोई और जिंदगी खुशी हो ना हो, until unless you aren't happy, content with yourself, बाकी चीजें don't matter at all. You won't be able to keep anyone happy, ठीक है, or make anyone understand until and unless you are there's the void inside you is filled up, and you yourself are going to fill that up. No one else, no person, no thing, no materialistic thing, no money, nothing of that sort can fill that up. वो देखो वो कह रहे हैं, bro, the problem is that my mind cannot form thoughts and feels always foggy. Foggy as in how? Foggy as in paralyzed, as in not able to understand the things you are. अच्छा तो ठीक है ना, इसके चैनल्स ब्लॉक्ड हैं कि he is depression जो है is in his genes. ठीक है, he has accepted the issue कि डिप्रेशन है इसको, he has identified कि यार मेरा माइंड नहीं खुल रहा, मैं आगे बात नहीं कर सकता. ठीक है, you need someone to a professional to talk to. I'd suggest you go to a psychologist, you talk to that psychologist. आपकी don't expect results in a few weeks or a few days. It's a long journey, but it is the right journey, and it is going to help you. Yes, so if you have a supporting family in a healthy environment, then Bilal ने भी यही कहा है कि then you need to open up and communicate with a professional. So you need to see a professional. Exactly. अगर आपका नहीं मामला हो रहा ठीक while talking to someone else, your family, your siblings or your friends, ठीक है, go to a professional. He is there for such situations. He is an experienced person who has studied such situations, and he knows how to deal with them. He knows how to channelize open up your mind and make you think. ठीक है, वो fog जो है वो हटाना ही उसका काम है. और वो लोग जो जिस तरह your parent, your father जो है वो he was open to the idea के psychologist के पास जाओ, but you know कि सारे नहीं होते. ठीक है, बिल्कुल totally understand. उसके लिए यार उसके लिए आप मैं एज एन इंडिविजुअल ये बोलूंगा, आप पहले अलग से जाओ. ठीक है, बेशक आपको चुप भी जाना पड़े, आप जाओ पहले अपने आप को. अगेन, आप जब तक खुद अपना वर्ड फिल नहीं करोगे, आप अपनी फैमिली वालों को नहीं समझा सकते या उनको आप नहीं मैनेज कर सकते. ठीक है,
I do and I did. I'm also consulting doctors. ठीक है. Is it three doctors? Is it any helpful? Is it of any help? फर्क पड़ रहा है आपको? आई एम श्योर पड़ तो रहा होगा. 19-20 का ही फर्क होता है. अब कोशिश आप ये करो कि पॉजिटिविटी लाओ. स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल हु मोटिवेट यू. ठीक है. पीपल हु हेल्प यू मूव फॉरवर्ड. जो नेगेटिव जितनी भी एंटिटीज उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो. फायदा नहीं होगा. ओके, आई थिंक बिलाल ने बहुत अच्छी ये आखिरी जो बात है दैट इज द ट्रिक कि अगर आप 8 pills a day, please comment on this. 8 pills a day. यार अब ये पिल्स वाला ड्रग्स क्योंकि मैंने खुद भी ना यूज की, ना मेरा उसमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, ना एक्सपर्ट हूं मैं, तो आई डोंट नो बट आई पर्सनली स्टेड अवे फ्रॉम ड्रग्स बिकॉज मेडिसिन्स, बिकॉज बात वही हो जाती है कि डिपेंडेंस हो जाती है. अब आई डोंट नो आपका क्या इशू है, किस स्टेज पे हो आप, तो आई कैंट कमेंट ऑन दैट. आई जस्ट एडवाइज यू, आप if you are getting pills, obviously you are going to a psychiatrist. Go to a psychologist. He is going to take 50-minute sessions of you. ठीक है, वो हफ्ते में वीक में 2 दफा होते हैं, सेशंस होते हैं. अब 50 मिनट आप सोचो, आप 2 दफा हफ्ते में जा रहे हो, आप अगर जाते हो 6 महीने भी, आप कितना बोलोगे और कितना कुछ आपके अंदर से निकलेगा. It is going to make you think yourself. आपके चैनल्स खुलेंगे. I'll repeat that again. And if you want to, you can DM me. I'll even guide you through. Yes, please. ये डॉक्टर हैं, ये खुद भी डॉक्टर हैं, बिलाल इकबाल जो हैं, तो you can consult him. Okay. I will comment on this too. अच्छा, any solution if that phase you thought that would be over but it took too long and it has turned into hopelessness even though staying positive changes to negativity. यार ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं भाई. Any solution in that phases you thought was over but it took too long to. यार it did take long but it is eventually you are getting over it, and as long as you are on the right path, as long as you are on the right track, टाइम फ्रेम को इनसे निकाल दो. नेगेटिविटी तो आती है, इट्स नेचुरल. आप इस तरह नहीं कर सकते दरवाजा बंद कर दी नेगेटिविटी नहीं आएगी. नेगेटिविटी आएगी. सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु सपोर्ट यू, योर फैमिली. ठीक है, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स अगेन. एंड इवन अगर आपका इससे फर्क नहीं पड़ रहा तो I'd say go to an expert. I would also say कि फ्रेंड्स और फैमिलीज से डिस्कस करना एक बात होती है, बट टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर एंड अ प्रोफेशनल स्ट्रेंजर is another liberating experience, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं किया तो you have to do it, because वो talking to a friend or talking to somebody you know से बहुत different होता है. और I think again if it's ये जो बिलाल ने बात की है कि it's been too long, time frame healing का time frame नहीं होता. like मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमने पहले एक इसी तरह लाइव स्ट्रीम की थी जिसमें if you would speak in English please, there are people who don't understand Urdu as well. Okay, I don't. Okay. अब प्रेशर में आ गया. नहीं प्रेशर कोई नहीं है. हाँ, I was about to say कि I talked to, we held a session before and we called Saad Suhail. Saad Suhail's father has been suffering from depression since childhood, and he has been on medication since more than 15 years. More than 15 years. You imagine the negativity you're talking about. He has been facing that negativity and fighting that negativity and struggling with that negativity since 15 years. So I bet that your negativity isn't longer than 15 years. It's smaller. So and he is a parent and he has other responsibilities as well. And most
probably he will keep fighting that negativity and depression throughout his life. He is on medication, he is on therapy, and with this sadness and mental health issues, there is no time frame. There is absolutely no time frame. You have to struggle with it every day, like Bilal did too. Like he has been going through this every single day since he was 1 year old. So there is no ending to negativity. There's no full stop. You have to keep dealing with it. You have to keep finding ways to carry it every day and to be at peace with it. You don't I think you should not focus on getting rid of that negativity, but be at peace with that negativity that look, like Bilal said, that acceptance. If you accept your situation, you accept that negativity as a part of you, you will be able to deal with it better in a positive way, and you will eventually get rid of it. So don't try to get rid of it right away. Just focus on understanding it and accepting it, and then moving forward. I'd like to add something to that. I'd suggest to manage issues on daily basis, rather than looking at them on a longer phase of time. Like, even if you aren't supposed to manage them on a daily basis, you manage them every hourly. Okay, this is right now. I'm going to spend this hour without negativity. I'm going to focus on positivity. I'm going to focus. But what do I have to? Again, the vision steps in. What do I want from life? Okay, you have to. For that vision, you have to work up. Make a planner, make an organizer, write down what you want to do in your life. You want to travel, where do you want to travel? You want to travel over here, here, and here. What do you want to do? You want to become an engineer? Okay, where do I stand right now? What am I going to do? How will I achieve this? Plan yourself, plan your day, plan your vision, experience, vision, and your goal of life on a day-to-day basis. You're getting my point? And I would again add another thing, that we are pressurized in doing things what normal people do. Like people like us who have mental health issues, we cannot perform the same way and the same things other people in society do. Like me, I was never a good student. I struggled throughout O levels and A levels. I struggled with my studies again, but I kept excelling at these types of things. I was a good musician. I was a good videographer. I was a good creative person. I was never good at things in which other people were good at. I was good at things in which I found peace and happiness, and I felt compassionate in doing them. So do not focus on achieving things which society wants you to achieve. Achieve whatever you feel like achieving. There's no hard and fast rule in life that you have to do this to be called a successful person, or you have to become a doctor, or do this or this, that, blah blah blah. That's all good for people who are meant to do those things. Not everybody is meant to do those things. Everybody has different strengths and weaknesses. So understand yourself and apply those skills you have in other places. There are ways to be successful in like everywhere. एक कोने पे एक चीज पड़ी हुई है for you to achieve. Yeah, I'd like to add, success जो है वो you define the success. You define your own success. No one else defines it for you. A person who earns, like, for example, 10,000 rupees, he is happy, he is content with his life. For him, he is successful. For himself, he is successful. But for you, he might not be. But you don't matter, because it is his life. Success जो होती है वो हर बंदा अपनी खुद success को जो है वो उसको define करता है. You are nobody to define anyone else's success. And with another thing is to be independent.
because you're so dependent on what society thinks of you, you will never be able to get out of that shadow. जो बिलाल ने पहले बात की कि he feels most liberated now because he's independent emotionally and financially, and जो भी जितना भी I don't know कमा रहे जैसे भी है, but he is independent. So work on being independent, not independent in the most efficient and most successful manner, but just independence. So once you do become independent, you will be, and I'm talking about not being emotionally dependent on parents, friends, or anybody. You should only be dependent on Allah, and that's it. Be your own hero. Yes. Do you know Saad Mirza? Saad Mirza sent a message that I want to join to. Saad Mirza is also a doctor. He is currently working in PIMS. Okay. He is my friend. He was my class fellow. Okay. I think काफी लंबा हो गया, but it was really helpful for me too. You have no idea how much you have inspired me, because I am a person who thinks about giving up 25 times a day, and finally I have, honestly, for now at least, I know how to channel that giving up negativity towards something, positive and something really encouraging and motivating. So thank you, Bilal Iqbal. I'm glad I could be of any help. Thank you so much for having me here. बाकी सबको कोई फर्क पड़ा हो ना हो, मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़े. So I am really happy and thank you so much. And any final words? Any shout outs? नहीं यार, shout outs नहीं. I would like to quote something I read recently ना. It was ये भी दिन आना था कि बिलाल किताबें कोट करे. देखो, there's always a time to take a start. Yes. अच्छा, make your vision clear so that fear becomes irrelevant. Repeat please, आराम से. Make your vision clear so that fear becomes irrelevant. Now explain. यार, विजन अगेन, जैसे मैंने पहले बोला था, विजन को आप सामने रख के जिंदगी गुजारोगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी. आप उसी विजन को फॉलो करते रहो. और फियर, वही बात है, फियर होपलेसनेस, और फियर ये ग्रो करता है जब आप इसको when you give into it. तो fear doesn't have to be a big, मतलब enormous vision. It can be as small anything. आप अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहते हो यार. You want your parents के वो उनकी ओल्ड एज में आप मदद करो, उनको हेल्प करो, उनको you just want to be there for them. तो ये भी एक विजन. हाँ, that is a vision. तो उसके लिए you try doing everything that you can do to help them, और उनके लिए खिदमत करो. And that is a vision in itself. विजन कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज. Okay, I think we will have you some other day as well. Or inshallah. And again, thank you so much, Bilal Iqbal. I think this was one of my Abhi Heather Saif Agha. You have to watch all of this again because this was amazing. And thank you so much again, Bilal. We can talk about it if you. We can, but this is not the right platform, or at least not the right topic we are discussing today. But yeah, obviously that is an issue as well. It is an addiction. And thank you. मैं फिर से thank you की train शुरू. Thank you so much, Bilal. Thank you for being so vulnerable, and thank you for being so open with your situation and conditions and everything. And I'm so happy we got to do this. So
Thank you so much for having me here, Rizwan. I've learned a lot as well, and this is my first time opening up to an audience I don't even know. I can't even see. But yeah, if किसी को भी हल्की सी 2% भी कुछ सीख सकता है मेरे से, तो आई एम नो बडी, बट अगर किसी को मैं फायदा पहुंचा सकता हूँ तो दैट वुड बी सुपर. ओके, थैंक यू. इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज, बिलाल इकबाल डॉक्टर भी हैं, तो यू कैन डायरेक्ट मैसेज हिम एंड आस्क अबाउट योर कंडीशंस. एंड साद मिर्जा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी आप बिलाल से 1-to-1 डिस्कस करें, मुझसे डिस्कस करें, किसी से भी डिस्कस करें. और लेकिन if you think that's bad for you, if anything is bad for you, escape it right now. So thank you so much, Bilal. Again, I will catch you later, inshallah. And best of luck. And Allah Taala आपको खुश और सलामत रखे. आपको भी आमीन, और पाकिस्तान को सलामत रखे यार अल्लाह ताला सबसे. अल्लाह हाफिज़. Bye bye.